एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं एक और वीडियो लेके आई हूँ कैबिन क्रू के इंटरव्यू के बेसिस पे है ये। दिस वीडियो इज रिगार्डिंग दैट व्हाट अ इंटरव्यूअर और व्हाट अ रिक्रूटर इज थिंकिंग अबाउट यू। In my past, when I was a instructor, when I was a trainer, I used to conduct mock interviews of my students. सो आई एक्चुअली नो, वहाँ बैठे बैठे 1 घंटे 2 घंटे में ये आइडिया हो जाता था कि एक इंटरव्यूअर, एक रिक्रूटर आपसे क्या डिमांड कर रहा है आप एक इंटरव्यू में. सो आई कुड हैव said all these things in English as well, but you know, I know, I'm also Indian. I know when you speak in your regional language, you speak in your national language, you tend to understand things in a better manner. So अगर मैं इसको पूरा इंग्लिश में बताऊंगी, though the cabin crew interviews are always conducted in English and you need a fluency in English and Hindi as well, but my video goes through, it's a global platform. So English is a universal language, I understand, but it's basically for the people of India and for my girls of India who are struggling to crack the cabin crew interview. I know nowadays it has become more tough, पर हम लोग जिस टाइम पे इंटरव्यू देते थे उस टाइम पे और भी टफ हुआ करता था. हमारे टाइम पे रिटन टेस्ट भी हुआ करते थे, एप्टीट्यूड, ग्रामर एंड मैथमेटिक्स, एवरीथिंग यूज्ड टू बी देयर, रीजनिंग एंड ऑल. सो अब थोड़ा इजी हो गया. जस्ट द इंटरव्यू क्वेश्चंस आर लिटिल डिफिकल्ट. I won't say difficult but challenging. So cut to short, let's cut to chase, and let's understand why I'm here and why I'm creating this video, and let's learn the perspective of a recruiter. Let's learn the perspective of a interviewer. See, I gave you a scenario. As an interviewer, I'm sitting on a table, I'm seeing, मैं already see, ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको समझाना चाहती हूँ. जब भी आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, you're getting my point, whenever you're appearing for an interview, let's say interview is starting at 11 a.m, be there at 10 a.m. There's a reason for that. I'm also human, I'm as a recruiter also a human, ठीक है. I also came early for the interview. There are a lot of chances when airlines are conducting their interview, the HR जैसे चंडीगढ़ या फिर जयपुर, रांची, ऐसी जगह होगी, वहाँ पे रिक्रूटर फ्लाई करके आते हैं. दिल्ली से, बॉम्बे से, बैंगलोर से, जहाँ पे भी उनका ऑफिस होता है मेन, वहाँ से फ्लाई करके आते हैं. तो दे आर ऑल्सो टायर्ड. रात की फ्लाइट पकड़ के, अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट पकड़ के, सुबह 5 बजे की फ्लाइट पकड़ के, दे हैव ऑल्सो कम. ठीक है, they are also tired. So I will be active for few hours, right? हमारे कुछ after lunch I will also not be active. And interview जब conduct होता है, इतने सारे candidates होते हैं, it takes a lot of time. See, you understanding my point? कि आप जल्दी आइए. I am as a recruiter, I am fresh. अभी 10 से 12 बजे या 1 बजे के बीच में, till the time I do not have my lunch, I am fresh. मैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आप पे फोकस कर सकती हूँ. उसके बाद मेरा फोकस जाने लगेगा, मुझे भूख लगने लगेगी, एंड आई बी टायर्ड, लाइक ओ गॉड, और भी है, कैसे कैसे लोगों को सुनना पड़ रहा है. और ऐसे टाइम पे आई विल फील लाउजी, आई गेट इरिटेटेड ऑल्सो. ठीक है ना. मेरा कोई काम करने, लंच के बाद किसी पे कुछ ज़्यादा काम करने का मन नहीं करता है. वी ऑल फील लाउजी, एंड द पर्सन हु हैज़ फ्लोन लाइक 2000 miles and woke up at 5 o'clock in the morning for a flight and then she is coming. So आप सोचो, it's a human body. आप जल्दी आएंगे, आप पहले राउंड में चले जाओ. पहले एज इन बैचेस कंडक्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए. आप एक बैच में, 2 बैच में, 1 से 5, 1 से 10 के बैच में आप चले जाओ. आप उससे लेट मत करो. जितनी जल्दी आप
एयरपोर्ट वेन्यू, इंटरव्यू के वेन्यू पे पहुंचोगे उतनी जल्दी आपका सिलेक्शन हो सकता है, उतनी जल्दी आपका इंटरव्यू हो सकता है, होने के चांसेस है। वहाँ जाके आपको 10 o'clock भी मैं लेट कह रही हूँ, आप 9 o'clock 9:30 तक मैक्स टू मैक्स वहाँ पहुँच जाइए। कोई भी नहीं है, डजेंट मैटर, आप वेट कर सकते हो, इट्स योर डे, ठीक है ना। यू आर देयर, यू वांटेड टू गेट सिलेक्टेड, सो जस्ट बी देयर बिफोर टाइम। आपके इंटरव्यू के वेन्यू को बी देयर बिफोर टाइम, एंड देन नाउ कमिंग टू द सिनेरियो दैट आई एम अ रिक्रूटर and I'm sitting on a table, you're coming, sitting. First of all, do not sit until unless you're not asked to sit. ये सारे अपने स्टूडेंट्स को भी मैं बताती हूँ. So sit, and the first round is always introduction, और आपका PI round होता है. आजकल PI round पहले होता है, that is your personal interview round, and you will start speaking. The moment you stop speaking, I'm asking question and you're like I don't know. Oh, even if you don't know, say it, I don't know. Oh, I haven't read about it. I'm not aware about it. I really apologize about that. Say that, but say something. See dear, you are a stranger, she or he is also a stranger. We both don't know each other. So till the time you don't speak, our recruiter is there to know about you. ठीक है? See, cabin crew के इंटरव्यू में दो चीज़ें होती हैं. One is your communication, second is your confidence. How confident you are. And confident you show from your dress up and from makeup. Dress up से तो होता ही है, with your smile. Your smile goes a long way. I'm so sorry, it's raining like cats and dogs in my area, and there must be some background noise, so I really apologize. Some kids might be enjoying the rain. So, my point is, he is there or she is there, the recruiter is there to check your communication. Communication is the prime. Ladies who all are watching my video, please do understand that recruiter is there to check your communication, and you can get rejected on the basis of your communication. So start working on your communication skills. And I'm not talking about just about English speaking. It's how you speak, it's the way you speak it. Always put a pause while speaking. Put a smile while speaking. It's very important, very, very important. I know when I used to conduct interviews, the only point which I used to tell my student was that they were not smiling. Ladies, when you're not smiling, you tend to get nervous. Even when you're not nervous, I will feel that you are nervous. And being a cabin crew, how do you think that someone has a pleasing personality if they are not smiling? Right? So it's very, very important that you smile. Second thing is, I talk about confidence. Confidence, ladies, dress to impress. You understanding? हाँ, कोई कहता है white shirt पहनो, black skirt पहनो. Gone are the days when you used to wear this black skirt and this white and the stockings and all. Gone are the days. This is the minimum you can do. Don't do anything which everyone can do. Do something impressive. You can put on a dress code like this matching blazer and skirt, maybe some pants, but always search the airline. If the airlines in their uniform they provide pants, then only wear pants. Otherwise don't wear pants. Always go for the skirt. Always get a blazer, matching blazer, good
pearl earrings, yes, it changes the games. It changes the game. So these two things that recruiter are looking, and I'm sure that you will work on this. And if you want me to teach you how to work on this, do let me know. Communication, ladies, it's very very important. And छोड़िए, दूसरे वीडियो का छोड़िए, इसी वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन. सी, आप इस फील्ड में जा रहे हैं, यू नो दैट यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, राइट? सो आपकी इंग्लिश इतनी तो होगी ही, जितना आपको इंटरव्यू में बोलना होगा उतनी तो अगर आपको आती ही है. आई नो दैट, इवन यू मस्ट बी नोइंग दैट, बट उसको इम्प्रूव कैसे करें? जो बोलना है, जो आंसर्स हैं, उसको कैसे इम्प्रूव करें? हेयर कम्स फ्रॉम मिरर. हमारे टाइम पे मिरर होता है, मिरर टॉक करो, देन इंक्रीजेस योर personality or increases your communication. But nowadays, ladies, we all got cameras, we all got smartphones, so record yourself. Record yourself is very very important. Even on when I have to give speeches in colleges, when I have to shoot something, I always practice while shooting. It's very important. Shoot yourself in the camera and then judge. You're the best judge of yourself. Judge yourself. This is the one way, and it's the best way to increase your communication skills. Second, confidence. Like I said, dress to impress. Your makeup should be on point. If you want me to make a video on makeup and hairstyle and dress up, do ping me in the comment section below. And in case you need more information regarding cabin crew interview, do let me know, dear. Lots of love. Subscribe if you want to crack the interview, cabin crew interview, and do like my channel. Thank you.